और कोई मेरे दोस्त विशेष विचार विमर्श करना चाहते हैं जी। Good morning. Good morning to all. Good morning to all the players. Good morning to all the coaches. बहुत बहुत धन्यवाद आज आप कोचिंग कर सके निशित सर सर अतुल सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइजेस व्हिच आर स्पेसिफिक टू वाटर स्पोर्ट्स। ओके, और हम लोग इन बेसिक है फिजियोथेरेपिस्ट, सो हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स साइंस को एज अ होल देखते हैं हम लोग, तो हमको तीन मेन गोल्स रहते हैं स्पोर्ट्स साइंस के। एक रहता है आपका इंजरी मैनेजमेंट, मतलब इंजरी होने के बाद क्या कर सकते हो। दूसरा रहता है इंजरी प्रिवेंशन, और तीसरा रहता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हम लोग आज एक्सरसाइज बताने वाले हैं, और हमारा मेन रोल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ इसमें मेन रहता है विद इंजरी मैनेजमेंट, इंजरी प्रिवेंशन। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए हम लोग गाइड कर सकते हैं, बट देयर आर बेटर पीपल, आप लोग वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस से जो लोग इसमें कर सकते हैं। वी कुड बी द वंस गिविंग सम नाइस डाउट्स, नाइस टिप्स टू यू गाइस। ओके, तो आज हम लोग ने जो एक्सरसाइज आपके लिए लाए हैं वो एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण से लाए हैं, ताकि आपके स्टूडेंट्स को आपके स्विमिंग है, डाइविंग है, वाटर स्पोर्ट्स के इनको इंजुरीज कम हो जाए। ओके, तो उस दृष्टिकोण से आज हम लोग आपको थोड़ा एक्सरसाइज बताने वाले हैं। ओके, आई एम युवराज सिंह, डॉक्टर युवराज सिंह। मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो मुंबई में हम लोग पिछले 12-13 साल से काम कर रहे हैं। I have Dr. Oshin with me today, and she will be taking over the presentation now. Dr. Oshin is a sports physiotherapist. Physiotherapy is a clinic specialized in musculoskeletal sports physiotherapy in Andheri East and Thane West. So, without further ado, I will hand over the presentation now to Oshin. Tell us a bit about हम लोग आज क्या करने वाले हैं, and then we will take back to the exercise. Oshin. এটা ফিজিওথেরাপিস্ট একজন যে খেলতে খেলতে পড়ে গেলে হাড় মাড়ে ভেঙে যায় না, তা না।
Yeah. Good morning, everyone. Good evening. Yeah. So welcoming you all for our session today. So today is a session on diving and swimming, जहाँ पे we are trying to discuss and introduce you to some basic exercises. Of course, ये exercises not compulsory that you have to do only this set of exercise. This is just a idea for you कि हम लोग क्या सोच के exercises बनाते हैं. So when we prescribe exercises for our athletes, for sports specific athletes, कि divers हो या swimmers हो, of course these both sports are very different. Both sports require very different components to be targeted on when we are practicing. But तो क्या हम सोच के exercises करते हैं? Sports physiotherapy basically is not just about injury management. I wanted to spread this message that sports physiotherapy can be exploited or can be used in terms of not only injury management but injury prevention and performance enhancement as well. So of course, coaches have their huge role in helping with the skills part. They have a major role in making us understand what are the athletes lacking. We can help in some components like what are the fitness components which might be lacking. जैसे किसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है क्या, या फिर डाइविंग में फॉर एग्जांपल किसी का टक अच्छे से नहीं हो रहा है. सो जैसे तुषार सर ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस विद अस कि सम एथलीट्स हैव रिड्यूस्ड टक, या फिर किसी का पावर अच्छे से नहीं आ रहा है, टर्न अच्छे से नहीं आ रहा है, सो दे नीड दैट नाइस कोर स्ट्रेंथ. So all these things have been coming from the coaches. So जितना coaches और हमारा अच्छा टाइप होगा, we can help the athletes more better. Can everyone please mute their chat? Yeah. So that was about sports physiotherapy. अभी what are we doing right now? So अभी lockdown चालू है, swimming pool चालू होने में बहुत time लगने वाला है, और but there is a good hope that badminton और थोड़े sports को सहमति मिल गई है. So they have been given permission to start. But in this meanwhile, अभी already 4 months are down. तो अभी हमें क्या करना है? So I think within a month or two we'll be back to sports. But can we jump back to sports at the same level जैसे पहले थे? We cannot definitely do the same intensity of exercise जितना पहला कर रहे थे, because that might lead to injury because our body is not used to that level of intensity right now. Of course बहुत जन घर पे exercises चालू रखे हैं, so body weight exercises या फिर based on your some equipments like TheraBands जो घर पे यूज कर सकते हैं, या फिर small weights at home. Even school bags लेके काफी बच्चे exercises कर रहे हैं. So that is a good thing. But what we wanted to help you out here is that we'll give you some specific exercises trying to target a specific component which is more specific to your sport. So हर एक sport का एक season रहता है. Of course अभी because of the popularity of sports coming in, seasons कम हो गए. जैसे cricket for example, last time हमने discuss किया कि cricket का अभी season नहीं रहा. पहले season होते थे, but अभी T20 आया, IPL आया, तो उसके वजह seasons have been spreading out. But again swimming and diving में अभी भी थोड़े seasons है. So when you are in the peak season, that is called as an in season, and just before that season, just before you start your practice, or just before you are going to go into the competition season, that is the pre-season time. So right now I would say कि अभी हम pre-season period में हैं. So what are we supposed to do in the pre-season period? So strength and conditioning में there are some things like intensity, volume which we need to consider. So right now let's try to concentrate on high volume. So तुम लोग कम weights use करो, but do more number of repetitions. Frequency थोड़ा ज़्यादा रखेंगे because we have more time now, because this is the pre-season, so we can work on our body more. So in this pre-season, try to work on high volume. Next is the in-season.
once you start entering a competition phase, तभी थोड़ा थोड़ा volume कम करना है and increase the skill training and थोड़ा सा intensity भी बढ़ा सकते हैं तभी, but make sure कि volume is slightly moderate, so you reduce it as compared to pre-season levels. And next is off season. Off season में try another sport or something else which is not being used in your sport. अभी जैसे swimming में there is a lot of shoulder movement involved, so try doing sports, playing sports which are not involving shoulders directly, थोड़ा running या फिर cycling या other sports like football या cricket भी चलेगा जिसमें ज्यादा shoulders involved नहीं है. And that is a very important thing for athletes and kids to understand, especially जो kids है हमारे पास, athletes who are not in the professional zone yet, maybe someone who is below 17 or so, उन सबको at least एक और sport खेलने अगर देंगे, not regularly and not professionally I'm saying, कि हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार, just recreationally, that helps in working at the other body parts. नहीं तो वही body parts जो sport में use हो रहे हैं वो हम use करते रहेंगे. So that basically gives a break. At the same time, you are avoiding deconditioning here. Okay? So that was about your seasons. Next we come to strength and conditioning. Now swimming and diving, as we said, are completely different sports. Diving involves a lot of power. There is a lot of anaerobic. Anaerobic यानी कि fast movements. Within I think 3 or 2 seconds and max to max 3 to 5 seconds, your sport is done. That one event is done. So that is called as an anaerobic phase. So anaerobic power ज़्यादा है in powers in diving. But when you say swimming में there are many types of distances which are there. So 100 meters है, 200 meters है, 400 है, IM है. So there are many things here. So based on the distance, your aerobic power मतलब अपना stamina, cardiovascular capacity जो बोलते हैं, हमारा stamina is more important in swimming. So there comes your aerobic training. Next is your mobility and stability. Diving is a sport where there is a lot of grace involved. So grace चाहिए मतलब mobility चाहिए. Your toes have to be pointed all the time. Your back has to be nicely arched. So those small points, of course, skill से आने ही वाला है. But if you have a lot of nice stability of your core, if you have a lot of nice stability of your shoulder muscles, तो वो handstand में इतना problem नहीं आएगा. There won't be that wobbliness which is there in the handstand sometimes. Or you know वो tuck के time पे अगर back का stability अच्छा है, then you have that nice turn. So these small things could help in getting that 1 point extra. So that is how we are trying to help you by trying to target those small niche areas. Of course, skill training में ये cover होता है, but exercise specific कौन से इसमें add कर सकते हैं, that we are trying to explain you. All right, I think so. Let's get back to the main thing which we are targeting. So this was a series of sessions which we had conducted for various sports. आज हम swimming और diving cover कर रहे हैं, water sports. So इसमें we have divided the exercises into 3 main categories. First is warm up, second is strengthening, and third is maximum explosive strength. That is MES or power as we say. So I think let's start off with the practical session. So laptop. Good morning, sir. ओके, सो जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़े वार्म अप हम लोग हमारे ओर से सजेस्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वार्म अप जो हम लोग करेंगे इसका एक कैन वी जस्ट टेक इट ऑन दिस साइड, दिस इज बेटर. या द फर्स्ट वार्म अप व्हिच वी आर doing is called as the fast feet. Okay, exactly. Yeah, fast feet. Yeah, show us fast feet. And we do this for 15 seconds and then we stop. Okay, 15 seconds on and 15 seconds off. Okay, 15 seconds on and off. 15 seconds on and off. Okay, एक बार और करेंगे fast feet and this is like full on fast feet. Okay, 1 2 3, yeah, go. And stop and 15 seconds. Okay, so you can do 5-6 sets of such kind of fast feet as an exercise which will be good. Okay, warm up का एक जरूरी चीज रहता है कि आपका body should get warmed up nicely, body का temperature बढ़ना चाहिए और ये उसके लिए बहुत अच्छा exercise है. Okay, first was fast feet. Second exercise है उसका नाम है windmill rotation. Okay, windmill rotation में go into 90 degrees. आपका hip is 90 degrees, knee is 90, पीछे वाला hip and knee is also 90 degrees. Okay, now you will now
you will have to bend from your, yeah, you are bending from your trunk, and then you are moving towards your right side. Okay, keeping the hand down, and then you are going to open up yourself. 1, and 3. Breathe in while going up and breathe out while coming down. Okay, so from sports physiotherapy I would say आजकल हम लोगों ने मसल्स को इंडिविजुअली देखना बंद कर दिया है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक मसल देखने से अच्छा है कि आप अगर पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर सके इन योर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, सो इट इज इवन मोर बेटर. और ये एक्सरसाइजेस पैसिव वर्सेस एक्टिव के, मतलब कोई मुझको आके स्ट्रेच करे उससे अच्छा खुद मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करूं, इट्स मच बेटर. सो हमेशा याद रखिए कि ट्राई टू इन्वॉल्व मल्टीपल मसल्स इन योर स्ट्रेचेस. जैसे इस एक्सरसाइज में आप आपके हिप फ्लेक्सर्स, आपके ट्रंक मसल्स, सब हिप रोटेटर सब साथ में इन्वॉल्व करते हो. ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज. और जो भी स्ट्रेचेस करते हैं वो एक्टिव होने चाहिए, मतलब the athlete does it by himself rather than somebody else stretching him out. Okay, the third exercise is squat jumps in streamline position. Okay, this is a kind of a warm-up again. Yeah, streamline position. Yeah, this is called as squat jump in a streamline position. And done. Wonderful. Okay, so 3 एक्सरसाइज हमने किए, 3 सैंपल एक्सरसाइजेस जो आप सोच सकते हो आपके एक प्रोग्राम में ऐड करने के लिए. फर्स्ट था फास्ट फीट, सेकंड था विंडमिल रोटेशन. विंडमिल रोटेशन आपके हिप्स को और ट्रंक को नाइसली ओपन अप करता है. स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपको वो ट्रंक रोटेशन मिल जाता है. ओके, तीसरा एक्सरसाइज स्क्वाट जंप्स इन स्ट्रीमलाइन पोजीशन. ओके, काइंड ऑफ स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो जाता है जहां पे यू आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन and use the advantages of squat also. Okay, and जब ये करोगे आपको आपका trunk extension maintain रखना है, bend नहीं करना है. Okay, beautiful. Okay, take a break Oshi, and then we will go to 3 few strengthening exercises. Okay, first exercise is plate pass. तो प्लेट पास में हम लोग एक छोटा सा वेट ले सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. यू हैव टू लाई डाउन प्रोन मतलब पेट के ऊपर उल्टा. ओके, और इस पोजीशन में ओके यू आर गोइंग टू पास द वेट फ्रॉम वन हैंड टू द अदर. या लुक स्ट्रेट. या वंडरफुल. Request everyone to please mute themselves. Yeah, wonderful. Okay, the other hand now. Okay. Yeah, so this becomes a kind of an exercise जहाँ पे आप you are doing the same action as required in swimming. Okay, just a second. Okay, good. Okay, so the next exercise after plate pass is Russian twist with flutter. Okay, Russian twist is the exercise for your abdominal core region. Okay, ये हम लोग एक मेडिसिन बॉल लेके कर सकते हैं, फुटबॉल लेके कर सकते हैं. मेडिसिन बॉल का एडवांटेज है कि उसमें थोड़ा वेट रहता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 किलो का मेडिसिन बॉल यूज कर रहे हैं. ओके, सो Ushin is in staying on her buttocks. Okay, keeping her spine erect, feet off the ground, and this is basically called as a Russian twist. जहाँ पे okay Russian, and this is called as a Russian twist with a flutter. ओके, यहाँ पे आप कोर यूज कर रहे हो. ओके, और इसको थोड़ा और एक्साइटिंग बनाने के लिए आप इसमें मेडिसिन बॉल यूज कर रहे हो. ओके, तो दिस इज रशियन ट्विस्ट विद द फ्लटर जहाँ पे आप आपका बहुत सारा कोर इस्तेमाल करोगे. एट द सेम टाइम आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, एक मूवमेंट कर रहे हो जो आपके स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक है. सो आपके एक्सरसाइज में जितने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स आते हैं उतना उसका यूज बेटर रहेगा जब आप स्पोर्ट्स के लिए करोगे. स्पाइन इज इरेक्ट. You are doing a nice Russian twist using your core. Toes are pointed, and you are doing nice flutter with this. Okay, beautiful Ocean. Okay, take a break. Okay, so अगर अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज देखे, one था prone plate pass, दूसरा था Russian twist with flutter.
अगर आप दोनों एक्सरसाइज देखते हो, इसमें एक स्पेशलिटी था कि दोनों एक्सरसाइज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक थे। मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो आप स्पोर्ट्स स्विमिंग में जैसे आप हैंड का मूवमेंट कर रहे हो उसको हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं, और रशियन ट्विस्ट में हम लोग जो पैर का मूवमेंट करेंगे उसके साथ हम लोग कोर स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों एक्सरसाइज थोड़े फंक्शनल थे हम लोग इस शब्द में कहेंगे। ओके, तीसरा है प्लैंक विद अल्टरनेट आर्म रेस। ओके, प्लैंक्स हम सब जानते हैं एक्सरसाइज। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। प्लैंक पोजीशन में जाके एंश्योर कि ये चेस्ट नीचे नहीं आना चाहिए, ये गलत हुआ। चेस्ट शुड रिमेन एब्सोल्युटली हाई, नेक शुड रिमेन न्यूट्रल, और इस पोजीशन में हम लोग अल्टरनेट हैंड अप्स करेंगे। 1 2 3, ओके 4। और जो एडवांस्ड एथलीट है इसी एक्सरसाइजेस में हाथ में 1 और 2 किलो का डंबल लेके भी सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन एन एक्सरसाइज जहां पे हम लोग स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, बट अगेन इन अ फंक्शनल पोजीशन। दिस इज द सेम पोजीशन जब आप वाटर में रहोगे तब करने वाले हो। 1 2 3। Plank is going to work again a lot on your core muscles. It is going to also work a lot on your shoulder muscles. Okay, so beautiful exercise which is called as the plank with alternate hand raise. Okay, that is the thing. और जैसे जैसे एथलीट एडवांस होते जाते हैं आप इनको तो इसमें आप वेट धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। 3 हमने स्पेसिफिक एक्सरसाइज किए, प्रोन प्लेट पास, रशियन ट्विस्ट एंड प्लैंक with arm raises. Wonderful. Okay, चौथा एक्सरसाइज इज स्लाइडिंग अडक्टर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग स्लाइडर्स करके स्टूल रहते हो खरीद सकते हैं, बहुत चीप रहते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज सॉक्स और यू कैन यूज अ हैंड टॉवेल ऑल्सो। इसके लिए ड्राई सरफेस लगेगा आपको जिसके ऊपर आप ये कर रहे हो। अडक्टर्स आपके हिप के अंदर के मसल्स रहते हैं जो आपको काफी जरूरी रहते हैं स्विमिंग में पावर जनरेशन के लिए। और आपको ये जो पोस्चर हमने उसी ने बताया, स्टैंडिंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट, इसको मेंटेन रखने के लिए। ओके, इसको मेंटेन रखने के लिए। सो यहाँ ये मसल्स कभी कभी छूट जाते हैं जब हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज स्क्वाट्स और लंजेस करते हैं। सो अडक्टर्स को सेपरेटली टारगेट कर रहे हैं हम लोग यूजिंग एन एक्सरसाइज कॉल्ड अडक्टर्स, एक्सरसाइज कॉल्ड स्लाइडर्स अडक्टर्स। ओके, सो यू विल गो इन एथलेटिक स्टांस पोजीशन, और यहाँ पे आप जाके यू स्लाइड द लेग आउट and slide the leg in. Beautiful. Slide the leg out, slide the leg in and out and in. And can you face me and do it one more time? Okay, yeah, slide the leg out. Okay, जो knee bend हो रहा है वो सीधा स्ट्रेट है। ओके, वो अंदर की तरफ घूमना नहीं चाहिए। ओके, इट शुड रिमेन स्ट्रेट। यहाँ पे आप अडक्टर्स ऑफ योर जो पैर जमीन पे है उसका भी, और जो पैर मूव हो रहा है उसके भी अडक्टर्स पे आप अच्छे से काम कर रहे हो। सो रादर देन डूइंग सिंपल लंजेस और सिंपल स्क्वाट्स, हम लोग अगर अडक्टर्स विद स्लाइडर्स करते इट इज इवन बेटर। ब्यूटीफुल, ग्रेट। ओके, वंडरफुल। ओके, सो हमने अभी तक 4 एक्सरसाइज देखे हैं। ओके, 3 एक्सरसाइज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक थे, एक एक्सरसाइज उस मसल के लिए था जो हमारे थिंकिंग में कभी कभी थोड़ा इग्नोर हो जाता है, वो है हिप अडक्टर मसल्स, आपकी हिप के इंटरनल मसल्स के लिए। ओके, अभी 2 हम लोग एनिमल रीच करेंगे। एनिमल रीच फॉर्म ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज है जहां पे आप आपके कोर और फ्लेक्सिबिलिटी पे साथ में काम करते हो, और इसकी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इनफैक्ट सब के सब वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट द यूट्यूब आल्सो फॉर प्रॉपर एक्सरसाइजेस एंड ऑलवेज देयर। आप कमेंट्स में हमको पूछ सकते हो अगर कुछ रह जाता है। ओके, 5th एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो है क्रैब रीच। Crab reach में you are sitting in this position. Okay, your fingers are pointing backwards, toes pointing straight, chest remains absolutely out. Okay, और इस पोजीशन में आपको आके एक हाथ को छोड़ दिया, you have to lift your buttocks full up, full up, full up, full up, and then twist करके आपको opposite elbow तक जाना है। Okay, and then bring it down and down. तो इस पे आप सब पे काम कर रहे हो। जब आप ऊपर जा रहे हो तब आपका हिप एक्सटेंसर्स या ग्लूट्स पे काम हो रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हो आपके लैटिसिमस पे काम हो रहा है, और आप जब ऊपर जा रहे हो आपके कोर पे काम हो रहा है। उसके साथ आप स्ट्रेच कर रहे हो आपके फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स, फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, फ्रंट ऑफ द चेस्ट मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हो। तो आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग साथ में कर रहे हो। मैंने एक मसल का नाम नाम दिया जो लैटिसिमस, जो यहाँ पे रहता है। और लैटिसिमस इज द मेन मसल इन स्विमिंग जो आपको पावर जनरेशन के लिए हेल्प करता है। जो आपका पुश या पुल रहता है वो पूरा का पूरा लैटिसिमस से आता है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। जब ब्रेक है, जब हम लोग जिम नहीं जा पा रहे, घर पे हम लोग बैठे हैं, ये एक्सरसाइज करके आप आपके बॉडी को
स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, दिखने में आसान है बट अगर आप इसको 10-15 बार करते हो, you will get a nice burn over your glutes, your core, your latissimus, your deltoids, इन सब पे काफी प्रेशर आएगा। ओके, एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा इस एक्सरसाइज में आपका फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम हो रहा है। The sixth exercise which we are doing is called as the scorpion bridge. ये भी एक एनिमल फ्लो एक्सरसाइज है। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रही है। You are going into a bare position, knees are off the ground. From here you will go back, buttocks को पीछे पुश करना है। Then you will take the right knee towards the left elbow. Okay, यहाँ से आपको आपके हिप्स को फुल एक्सटेंड करना है, नीज को फुल बेंड रखना है, शोल्डर्स को डाउन करना है, टोज को पॉइंटेड रखना है और जो पैर जमीन पे उसको फुल स्ट्रेट करना है। वंडरफुल, एंड देन बैक टू द लेफ्ट एल्बो एंड यू विल टच डाउन। ओके, आप इसमें ग्रेस कंपोनेंट को सोच सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट को सोच सकते हो। ओके, यू आर डूइंग हिप एक्सटेंसर का वर्क, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग ऑफ द लेग व्हिच इज ऑन द ग्राउंड। इसमें आपके हैंड्स पे बहुत प्रेशर आता है, स्कैपुला स्टेबलाइजर्स पे बहुत प्रेशर आता है, जो हम लोग हैंडस्टैंड की बात करते हैं या उसमें इस एक्सरसाइज का काफी यूज होगा। ओके, और अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज व्हिच इज वेरी गुड फॉर स्विमिंग एंड डाइविंग, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रीम लाइनिंग हम लोग वापस अचीव कर रहे हैं। बस दैट इज गुड। ओके, टेक अ ब्रेक क्वेश्चन। ओके, सो हमने 3 वार्म-अप एक्सरसाइज किए जहां पे गोल था कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। ओके, हमने फास्ट फीट किए, हमने विंडमिल किया और हमने स्क्वाट जंप्स किए। फिर हमने स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग को कंबाइन करके थोड़े हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज किए, प्रोन प्लेट पास किया, हमने रशियन ट्विस्ट किए, प्लैंक विद अल्टरनेट आर्म रेज, स्लाइडर्स, अडक्टर्स, क्रैब रीच एंड स्कॉर्पियन रीच। तो 6 कसरत हमने किए जो स्ट्रेंथनिंग के लिए थे। ओके, अभी हम लोग जाएंगे 6 एक्सरसाइजेस जो है स्पेसिफिक फॉर मैक्सिमल एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और या जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं पावर। पावर इज वेरी वेरी इसेंशियल। डाइविंग तो पूरा का पूरा पावर स्पोर्ट है। इट गेट्स ओवर इन आई डोंट नो, तो आप लोग ज्यादा बता पाओगे 0.5 सेकंड्स में कि आपका पूरा गेम उस एक पावर जनरेशन में डिपेंड करता है। ओके, स्विमिंग में भी, स्विमिंग जब आप स्टार्ट करते हो और स्विमिंग का बहुत सारा कंपोनेंट 100 मीटर डैश है या है, ये पावर पे डिपेंड करता है रादर देन स्ट्रेंथ पे। सो यू कैन हैव अ कंडीशन जहां पे आपके एथलीट में स्ट्रेंथ अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, पर पावर नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू नीड टू हैव गुड पावर आल्सो। सो पावर को हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं मैक्सिमम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो है SLDL हॉप्स, मतलब सिंगल लेग डेडलिफ्ट हॉप्स। ओके, गुड। Single leg deadlift, yeah, she will go in this position and then she will take a hop, yeah, good, down. Okay, again single leg deadlift and hop. Okay, single leg deadlift. Okay, और इसी को अगर आप एडवांस करना चाहते हो you can take a, yes, good. Okay, और इसी को अगर आप एडवांस एथलीट जो है, इसी को आप फिर डंबल लेके, दोनों हाथों में डंबल पकड़ के या एक हाथ में लेके यू कैन डू इट। या जिस हाथ जो पैर ऊपर जा रहा है उस हाथ में डंबल पकड़ रहे हो आप। गुड, ओके, वंडरफुल। टेक अ ब्रेक। ओके, सो यस, नी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लैंड करोगे आपका नी अंदर की तरफ मूव नहीं होना चाहिए। ओके, वंडरफुल। टेक अ ब्रेक। ओके, सो फर्स्ट पावर एक्सरसाइज है सिंगल लेग डेडलिफ्ट विद हॉप। जितना आप अप जा सकते हो उतना अच्छा। यहाँ पे रेप्स पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके फॉर्म पे और आप पावर जितना जनरेशन कर सकते हो उस पे। ओके, पावर एक्सरसाइजेस आपको 15-15, 30-30 बार करने की जरूरत नहीं है। पावर एक्सरसाइज जनरली हम लोग 6 टाइम्स कहते हैं, 6 रेप्स कहते हैं। 6 रेप्स के बाद ब्रेक लीजिए और 2 से 3 सेट्स कीजिए। ओके, तो पावर एक्सरसाइजेस बिकॉज ये डिफिकल्ट रहते हैं, यू वुड से कि 6 रेप्स इनटू 3 सेट्स। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो हमने की आप उसको आप बढ़ा सकते हो, उसको आप 15 रेप्स इनटू 2 सेट्स कर सकते हो, पर पावर एक्सरसाइज को रेप्स कम रखिए और 2 या 3 सेट्स ही कीजिए। ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्प्लिट जर्क। Okay, the next exercise is called as the split jerk. Okay, sure, go Ashita. या सो आप एक डंबल लेके सके, हाँ, जो पैर पीछे है उस हाथ में डंबल है। ओके, 1 2 3
एंड ओके। सो यहाँ पे आप वो एक्सप्लोजन ट्रिपल एक्सटेंशन हम लोग जिसको कहते हैं वो आप अचीव कर रहे हो इसमें। ओके 1 2 3 एंड गो। वंडरफुल। जो पे ओके ओके या तो कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? या सो स्विमिंग और डाइविंग में दोनों में कोई भी स्पोर्ट में इनफैक्ट सब में एक डोमिनेंट लेग रहता है। सो यूजुअली हम दोनों लेग से जब स्क्वाट जंप्स कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज वन लेग व्हिच इज स्ट्रेंथेंड मोर, मतलब कंसंट्रेट मोर अननोइंगली। तो इंडिविजुअल लेग ट्रेनिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो सिंगल लेग ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए स्प्लिट जंप्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। Okay. Okay, so this is called as the split jerks. Okay, third exercise is kneel to squat. Okay, kneel to squat is an exercise जहाँ पे yeah one good. Okay, from kneeling you are jumping into a squat position. Okay, और इसको अगर आपको प्रोग्रेस करना है या बैक स्ट्रेट रख के करना है आपको ये या kneel to squat. वंडरफुल। ओके, और स्क्वाट से अगर आप हो सके अगर आपके पास ऑब्स्टेकल्स है तो स्क्वाट से जंप ऑन अ स्टूल, लो स्टूल जैसे हमने बाजू में रखा है, and from low stool you can jump on the higher stool. Okay, so that could be obstacle for your kids. Kneel to squat, squat to low stool to a high stool, and then high stool से आप box jump कर सकते हो. So that would be obstacle course which can be created. Okay, so this is again working on that power. अगर ये चीजें अच्छी हो तो आपका जंप अच्छा रहेगा, आपका टक अच्छा रहेगा। ओके, और आप जो एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो वो इसमें अच्छे से होगा। ओके, इसके बाद हम लोग 2-3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले हम लोग वॉर्जाउ कर लेते हैं मशीन। ओके, जो अगेन एक्सरसाइज है स्पेसिफिक व्हिच आर कॉमन टू बोथ स्विमिंग एंड डाइविंग मेरे ख्याल से। ओके, ये स्पेशली जंप के आपके स्टार्ट के लिए काफी अच्छा है वॉर्जाउ जंप्स। ओके, तो स्प्लिट लंज में जाके ओके आप यहाँ से जंप लेने वाले हैं। गुड, वंडरफुल। एंड इसी को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो वी विल टेक बिट्स, बस दैट्स गुड। ओके, अगेन 6 reps, 3 to 4, 2 to 3 sets are sufficient for this. Okay, take a break. Okay, so maximal explosive strength, पावर के बारे में आपको एक और चीज कहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूरी है और पावर भी जरूरी है। पर पावर डेवलपमेंट के लिए बेसलाइन स्ट्रेंथ होना बहुत 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 जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली स्प्लिट जर्क और नी टू स्क्वाट में जा सकते हो। अगर जो बंदा अगर नोवाइस है और जो प्लेयर्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इतना नहीं कर रहे, स्पेंड 1 month इन एटलीस्ट डूइंग सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में एक्सपर्टाइज हो गए, देन दे शुड गो फॉर पावर एक्सरसाइज। पावर एक्सरसाइज आखिर में रखिए क्योंकि जब तक मसल में स्ट्रेंथ नहीं है वो पावर जनरेशन नहीं होगा एंड यू विल एंड अप विद इंजरीज। सो पावर एक्सरसाइज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, but it should not be used to start with. Okay, first start with your basic exercises, start with strengthening exercises. आपके हमने जैसे कहा हमने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हुए, क्रैब रीज, स्कॉर्पियन, ये सब हुए। उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद, 3-4 हफ्ते के बाद, once you are confident your student is ready, then go for power exercises. But for elite athletes जो आपके 7-8 बच्चे हैं और जो कॉम्पिटिटिव है नेशनल लेवल पे, उनके लिए तो पावर एक्सरसाइजेस हफ्ते में 2 बार करना बहुत 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 जरूरी है। ओके, 2 exercises which are very very specific now to getting a tuck position for all our divers here. First exercise is your candlestick. ये शायद आप हमसे बेहतर कर पाओगे पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने। कैंडलस्टिक एक्सरसाइज, यस, एंड अप, ओके, एंड डाउन एंड अप, ब्यूटीफुल ओशन, एंड अप, एंड वन लास्ट टाइम, अप एंड अप, वंडरफुल। ओके, so this works heavily on your abdominal muscles. Okay, और जो हम लोग हमेशा कोचेस कंप्लेन करते हैं कि हमारे स्टूडेंट का टक बराबर से नहीं हो रहा है, उसके लिए ये एक्सरसाइज काफी काफी अच्छा है। अगेन पावर एक्सरसाइज, you can again do this exercise to make it more fun, holding a medicine ball in your hand. Yeah, you can do it with a single leg also. Yeah, and okay, so this is how you can create a candlestick as an exercise. Okay, and the last exercise जो दिखाने वाले हैं जिसके लिए आपको मेडिसिन
स्विस बॉल लगता है, स्विस बॉल लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको पाइक ऑन अ स्विस बॉल हम लोग कहते हैं। ओके, पाइक तो आप लोग कर ही रहे हो, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने अनस्टेबल सरफेस डाल दिया है जिसको स्विस बॉल कहते हैं। ओके, सो वी आर डूइंग पाइक्स ऑन अ स्विस बॉल। वंडरफुल, यस, गुड, एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप and break, take a break. Okay, wonderful, 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 take a break. Okay, okay, so guys, ये कुछ एक्सरसाइजेस थे मिलजुल के हम लोगों ने आपको, हमने आपको मिलजुल के 15 एक्सरसाइज बताए, 3 वार्म अप, 6 स्ट्रेंथनिंग के और 6 पावर के एक्सरसाइज हमने आपको बताए। जो पावर के एक्सरसाइजेस थे आप लोग हमसे काफी बेहतर रहेंगे, तो उनको फुल स्ट्रेंथ से कीजिए। हम लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है, हम लोग उतना प्रैक्टिस नहीं करते जितना आप लोग करते हो, पर पावर की एक्सरसाइज जब आप करते हो फुल स्ट्रेंथ लगा के कीजिए। स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज जब आप पावर की एक्सरसाइज करते हो पूरा आपका 100% देके कीजिए। ओके, जो हमने पाइक किया यू कैन डू इट फास्ट। ओके, क्योंकि जहां पे फुल पावर की जरूरत है, 6 रेप्स करके ब्रेक लेना है। ओके, क्योंकि उसके ऊपर करके आप जो एनर्जी सिस्टम है उसको आप चेंज करते हो। आपका जो मेन एनर्जी सिस्टम जो है वो है आपका एनारोबिक सिस्टम जब आप पावर में रहते हो। तो अगर आप 10-12 रेप्स करते हो यू आर गोइंग इनटू एरोबिक्स, तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता। सो एंश्योर आप जब पावर की एक्सरसाइजेस करो, एंश्योर यू डू ओनली 6 रेप्स और उसके बाद नहीं कीजिएगा। ओके, वेट्स बढ़ाइए, मेक इट मोर डिफिकल्ट, मेक द स्पीड मोर, वैसे करके बेटर रहेगा। ओके, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, एंश्योर फॉर्म अच्छा रहे, एंश्योर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाए और एंश्योर आप स्लोली कीजिए। ओके, so ये exercises थे. Ocean will take over the presentation. Yeah, and we will end, and then we'll take some questions from. Yeah, so this was the list of exercises जो हमने आज किए. This video will be available on YouTube as well later. So आप लोग if you want to refer it back again and if you want details, so you can definitely get back to this. So ये हमने 3 forms बताए थे, जैसे ये warm up, strengthening and maximum explosive strength. So yeah, so positive physiotherapy has started with one-on-one sessions. अभी of course we are located right now and Thane West as well. So if anyone has, if not in person, then if you have any doubts, you can definitely message us or contact us via mail. Our YouTube channels are open for everyone, and all these exercises have been given in detail with the instructions. So अगर किसी को कुछ भी doubt है to how to perform those exercises, you can get back to this video, or the individual exercise videos have been uploaded on YouTube as well. So yeah, if any doubts, we are open for questions now. Tushar sir, I hope we did justice to your sport. Hello. Hello. Yeah, Shin ma'am. It's audible. Yes, sir. Yes, it's justice to our sports. First of all, thank you very much, Dr. Yuvraj sir and Oshin ma'am and entire team of Positive Physiotherapy. You are doing a wonderful job. और आपका अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद ऐसा लगा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट इन डाइविंग स्पोर्ट्स और आप जो रिसर्च करके डाइविंग के ऊपर और स्विमिंग के ऊपर जो रिसर्च करके जो एक्सरसाइज प्लान किया है वो बहुत ही अच्छे एक्सरसाइजेस है। और जैसे कि मैं आपके पास आया था, इंजरी, मेरा बैक का इंजरी था और उसके बाद में बैक के इंजरी से रिकवर होने के बाद में जैसे मैंने अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे आपके साथ में वर्क करना स्टार्ट किया और वैसे जैसे रिजल्ट आने के बाद में कि मेरे साथ में जो प्लेयर्स है टक एंड डाइव के जो भी डाइवर्स है वो भी आपके अंडर अभी ये कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, एक्सरसाइज आपसे ही लेके एक्सरसाइज कर रहे, तो मैं डेफिनेटली चेंजेस देख रहा हूँ उनमें, खुद में भी देख रहा हूँ और यही चेंजेस मुझे एंटायर इंडियन डाइविंग टीम में देखना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है डाइविंग के लिए वो सभी इंडिया के डाइवर्स उन खुद स्टार्ट करें एक्सरसाइज करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन रखा
और बहुत ही अच्छे से आपने बहुत सारे कंपोनेंट, वार्म अप कंपोनेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एंड पावर एक्सरसाइज, ये सभी आपने कवर किया इसमें। आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जैसे कि इंडिया में ये डाइविंग स्पोर्ट्स है कि ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, भले उसका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा लेवल है, ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट इंडिया में उसका ये इट्स अ ग्रोइंग स्पोर्ट्स, और ये ग्रोइंग स्पोर्ट्स को ग्रो होते वक्त कोई हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बहुत ही राइट काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखा जाए कि यहाँ पे अपने सेशंस में मयूर व्यास सर है, जो भी टेक्निकल डाइविंग कमेटी के हेड है, खुद फीना ओलंपिक जज है, और बहुत सारे कोचेस है प्रोफेशनल लेवल पे जो एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्लब लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं, स्टेट पे ट्रेन कर रहे हैं, और साई के भी कोचेस है यहाँ पे, उन्होंने ज्वाइन किया है। और सभी को पता है कि जैसे कि NIS ये कोर्स रहता है नेशनल लेवल पे जो कि करते हैं, और वो नेशनल लेवल का कोचिंग में ऐसे है कि वहाँ पे जितना डाइविंग के बारे में इतना नहीं सिखाया जाता, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ये कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो कवर किए। इसके लिए मैं फिर से एक बार एंटायर डाइविंग टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। Thank you so much, sir. Yes, thank you. And thank you all the coaches to be present here. I hope इसका कुछ फायदा हुआ हो आपकी तरफ से. Of course, we definitely always keep saying हमारे physios के लिए भी कि it is very important for physios to have a connection with the coaches, because the coaches will explain you better कि what is exactly needed. बहुत बार होता है कि physios assume करते हैं कि उनको ये लगेगा, but it's important to have that rapport with the coach to understand कि actually इसकी जरूरत है क्या, और is there anything else which the coach wants in the athlete to be trained. So I think वो connection होना एक जरूरी है, so that the athlete is benefited out of this time. So yeah, I think Exactly. Somnath sir had some doubt. ये नहीं, मैं एक हेलो। हाँ सर, बोला ना। Tushar. Yes sir, मयूर सर बोलिए सर। Okay, thank you very much, madam. I would like to ask one question. Yes sir. About after injury rehabilitation, how it helps to diver, and how fast it can be after injury. So it depends. Mayur sir, thank you so much for coming to this session first of all. So injury rehabilitation, as we said. So injury rehabilitation, it depends on what exactly the injury is, and there are some factors which we need to consider. There are many factors, in fact. And recently, it's not just your load, training load, or कितना exercise कर रहे हैं या फिर कभी injury हुआ, but also there are other factors like recovery, like sleep, like nutrition, which are coming into picture. So recovery एक बहुत बड़ा component हो जाता है many of the times, because training load हम कम कर देते हैं, but बाकी recovery हो रहा है कि नहीं, sometimes it gets missed out. So अगर rehabilitation भी fast करना है, तो these other factors need to be considered. Your second question was कितना time लगेगा to get back. As we said, if we what we should do is during rehabilitation deconditioning होने नहीं देना है. So make sure बाकी वो part जो आपका injured है वो छोड़ के बाकी areas we keep on continuing. And I think one important part, as sir said, ki baseline testing. So I think Tushar sir has, since we are in contact with Tushar sir, Tuck and Dive team has been doing some fitness testing which we do every 3 months. So fitness testing is the baseline testing which you understand कि students का baseline data क्या है, कि उनका flexibility कैसा है, किसी का power कैसा है. So there are particular tests which help us understand कि core का strength कितना था baseline में. So after injury or after rehabilitation, is he back to that previous level? So I think that is an important data which you can compare. So that becomes more objective rather than subjective. कि हम ऐसे नहीं बोल रहे. We have some data in hand कि वो professional athlete पहले ये level पे था. We have some data regarding the power. We have some data regarding the range of motion. If we try to compare it to the pre-injury levels, I think that would be a great baseline कि कैसे he can get back fast. Okay. And I would like to request you, if we have a national camp, I would like to call you over there. Definitely, sir. See our divers. Definitely, sir. And give us a feedback on that. Yeah, definitely, sir. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your presence. Oshin ma'am, Yes, sir. I just want to
जस्ट से कि अभी जो हम लोग ने जैसे एक्सरसाइज दिखाया ये ओशिन मैम ने, वो फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये फिजियो वाले एक्सरसाइज नहीं थे कि लाइक हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये फिजियो वाले एक्सरसाइज है कि थोड़ा सा कम इंटेंसिटी का है, लेकिन आप खुद भी करके देखिए एक्सरसाइजेस, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है। अपने को दिखने के लिए ये एक्सरसाइजेस वैसे नॉर्मल और इजी लगते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने कैटेगराइज किया कि एक बेसिक लेवल एथलीट और इंटरमीडिएट लेवल एथलीट और एक एलिट एथलीट को ये एक्सरसाइजेस कैसे प्रोग्रेशन में देने चाहिए। जैसे कि हम लोग का रहता है एक नॉर्मल डाइव है और फिर एक 1.5 समरसॉट है, फिर एडवांस लेवल पे जाके 3.5 4.5 समरसॉट आता है। जैसे वैसे ही स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का भी प्रोग्रेशन है और वैसे उन्होंने बताया है बहुत डिटेल में लेके। तो ओशिन मैम अभी टक एंड डाइव वेबिनार कर रही है, सैटरडे टू सैटरडे एक से वेबिनार हो रहा है, तो मैं वो वेबिनार और आज का जैसे कि झलक था एक डाइविंग के स्पोर्ट्स के एक्सरसाइज के लिए, तो वैसे हम लोग और एक ऐसे आपके साथ में एक वेबिनार करना चाहेंगे जो कि थोड़ा डिटेल में क्या बोल रहे रहेगा। Yes, sir. तो Sir, I थैंक think. यू वेरी मच अगेन। Thank you, sir. Sir, I think we also have Sandeep sir here. Sir, I think you're. नमस्ते मॅडम. Good morning, sir. Morning. Sir, I hope swimming ला पण justice झालं. So you know, diving and swimming definitely are different sports. But we had Sia with us for a few months. For I think it's been 2 years now. Yeah. And being with the athlete for a longer time and having a coach's reviews about the athlete is very important here. So thank you so much for your contribution, for helping us out with helping your athlete. So थँक्यू व्हेरी मच मॅम. युवराज सर आणि तुम्ही नेहमीच जेवढे सेशन्स घेतलेले आहेत, मी जेवढे तुमच्या युट्यूब वरती हे बघितले ते खरंच खूप छान आहेत. आणि या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या ह्या लॉकडाऊन्स मध्ये बऱ्याच आपल्या ऍथलीट्सने ह्या केल्या पाहिजेत. Sir, can I request you to address in Hindi because a lot of ओके ओके, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम, नो सब इश्यू, बाहर के बहुत है सर इसमें। नो इश्यू सर, नो इश्यू सर, सॉरी सर. ओके, आपने जो भी यूट्यूब पे ये जो आपका सेशन है, आपने जो ये वेबिनार्स डाले हुए हैं वो काफी इम्प्रेसिव है. मतलब मैंने जितने भी आपके वेबिनार्स और वो सब देखे हैं, मेरे काफी बच्चे लोग ये फॉलो कर रहे हैं. मैंने खुद इंडिविजुअली डॉक्टर युवराज सर का और आपका सेशंस ये किया है मेरी प्रीवियस इंजरी के लिए, और उसमें भी मुझे काफी फर्क पड़ा. आज बहुत सारे वही एक्सरसाइज मैं अभी करता हूँ और उसमें से काफी एक्सरसाइज जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने अपने बच्चों को भी दिए हैं. और हम लोग का वीक में 3 डेज एक्सरसाइज सेशंस चलता है. और डेफिनेटली आपने जो आज एक्सरसाइज बताया है उसमें से 2-3 एक्सरसाइज मेरे लिए भी नए थे. आई होप कि मैं भी वो आपने वो लिखा था कि आपके बैग में वो ऐड करो, मैं डेफिनेटली इसको ऐड करूंगा. सच्ची में ये बहुत वंडरफुल सेशन था आपका. आप ऐसे ही सेशंस thank you so करते much, रहो. sir. ओके, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you so much. वेरी मच. Sir, you would like to add anything? Thank you so much, all the coaches. आप सवेरे आए यहाँ पे and you graced our webinar today with your presence, with your valuable inputs, and positive team is always there for any help you want. We believe कि अगर स्पोर्ट्स को इंडिया में बढ़ावा मिलना है तो कोचेस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, फिजियोज, प्लेयर्स सबको साथ मिलके काम करना है, ना कि इंडिविजुअल रह के. So वो हम लोग एक करने की कोशिश कर रहे हैं. And I'm very sure हम सब लोग साथ में काम करेंगे तो ये स्पोर्ट्स, दोनों स्पोर्ट्स काफी बढ़ते हैं. Thank you so much guys. See you soon. Bye guys.